Hello, very good evening to all, and welcome to the class. How are you all? Yes. Okay. So we already covered till the magnetic property, right, in the last class. As the number of unpaired electron increase, paramagnetic character also increases. So as we can see that is the formation of colored ions by the different element of the 3D series. For example, we have a titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel and copper we have. So titanium किससे represent करेंगे हम लोग Ti से, and titanium form complexes of violet color. Vanadium will form violet, green, blue, yellow, right? So these all are the different colors formed by the 3D series element. Okay, so why they form colored ion? Is there any specific reason behind this for the formation of colored ions? Yes. So they form colored ions, right? Due to transition of the unpaired electron. So when the DD transition of unpaired electron takes place, then they form colored ions. Okay. Now, सो लेट अस assume we have a dd transition. कैसे समझेंगे? सो मान लो हमारे पास दो एनर्जी लेवल डायग्राम्स है, दैट इज द लो एनर्जी d ऑर्बिटल्स एंड द हाई एनर्जी d ऑर्बिटल्स. ओके, सो एक जब भी इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे. व्हेन दे रिटर्न बैक टू द हाई एनर्जी लेवल टू द लो एनर्जी लेवल, दे एमिट रेडिएशन व्हिच इज लाई ऑन द विजिबल रीजन, जिसके चलते हम लोगों को दिखाई दे रहा है कलर. डिफरेंट डिफरेंट कलर भी है, राइट? सो सम एक्सेप्शंस भी हैं. फॉर एग्जाम्पल V5 हो गया, क्रोमियम +6 हो गया, Mn+7 हो गया. दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो डी ट्रांजिशन नहीं होगा. लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल में डी का ट्रांजिशन नहीं होगा. सो वी कैन से दैट कि हाउएवर if there is no DD transition, if there is no unpaired electron, then how they form colored ion? So वो आता है due to the charge transfer phenomena. So remember some ions are also colored in nature even if they do not have any unpaired electron.
right? So if they do not have unpaired electron, even they form colored ion due to charge transfer. Okay, so you need to remember this. Done? Got it now? ठीक है. Now, let's assume we have a metal, right? हमारे पास एक metal है, and these are the ligands. So the formation of complex compounds also takes place. So formation होता है complex compound का कब? So formation of complex compound भी होता है जब metal और ligand के बीच क्या बनता है? एक bond का formation होता है. तो whenever the metal और ligand का bond बनेगा, so वहां पे हम लोग का एक complex compound का formation होता है. So this also remember how this complex compound formation takes place. So basically what happened now, कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे हैविंग वेरी हाई आयोनिक चार्जेस एंड आल्सो ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होता है, अवेबिलिटी होती है किसकी, डी इलेक्ट्रॉन्स की. हम्म. सो लीगेंड्स के पास क्या होता है, लोन पेयर डोनर्स, लोन पेयर जो डोनेट करते हैं दैट इज कॉल्ड लीगेंड्स. सो उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और मेटल के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल. सो मेटल के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, लिगेंड्स के पास होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. तो मेटल और लिगेंड के बीच एक बॉन्ड बनता है, ठीक है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. तो वहां पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा एंड मेटल जिसके पास एब्सेंस वैकेंट डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो उस लिगेंड्स को एक्सेप्ट करेंगे और इसके तरह से फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बनता है. सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट चैप्टर इन अ वेरी डिटेल वे, दैट इज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन करने वाले हैं. So no need to worry for this, right? Okay, some examples of complex compounds are FeCN6 we have, and like this, right? What is bond name, sir? That is called coordinate bond, beta, right? So this type of bond is called coordinate bond. And the chapter name is also called coordination compound. So this we are going to study in the next chapter, right? Okay. Hmm. Chalo. So D block elements also form very good complex compound. Now, D block element act as a very good catalyst as well, right? So they convert reactant into product very easily. That's why they act as a very good catalyst as well. Why they behave as a good catalyst? The question arises, कि why D block element act as a very good catalyst? So you have to say due to the multiple oxidation state. The first criteria is due to the multiple oxidation state. So due to the presence of multiple oxidation state, they form complexes, right? For example, in contact process, so in contact process, we prepare H2SO4, right? H2SO4 is prepared in the contact process. So for this contact process, we use oxide of vanadium, that is V2O5 as a catalyst. तो कौन as a catalyst काम करता है, V2O5. So V2O5 vanadium pentaoxide act as catalyst, ठीक है. So always remember in many process like in the preparation of ammonia as well, in Haber process also we use iron as a catalyst, right? So D block element act as a catalyst due to the variable oxidation state and they form complexes. Okay. Now in Haber process or in Haber process also we use the finely divided Fe, which is act as a catalyst. Done? Chalo. Now, the next very important property of the D block elements are they form interstitial compound. So the formation of interstitial compounds are also took place, right? तो इसमें फॉर्मेशन होता है हम लोगों का इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का. सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं जिसका फॉर्मेशन हमारा होता है. व्हाई दिस विल फॉर्म, तो दिस इज फॉर्म बेसिक. यस निराली, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Okay, so the formation of interstitial compound due to the small size of this hydrogen, carbon, and nitrogen.
they are fit between these gaps, right? So for example, if we have a transition element, so उन transition elements में बीच में ना gap होता है, तो उस gap में ये atoms जो होते हैं, small atom like hydrogen, carbon and nitrogen, they can easily fit. So they form the interstitial compound, right? Now what about their nature? Ionic, covalent, stoichiometric? No. So बेटा what is interstitial compound? Basically interstitial compound we can say that ना कि जब छोटे छोटे elements like the small size element like carbon, hydrogen and nitrogen, when they occupy the gap between these two atoms. For example एक crystal lattice है जिसमें सारे atom arranged है, कोई भी transition element है, तो उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो गैप है, उस गैप में छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, दे विल उस गैप को फिल कर देते हैं, एंड ऑल्सो दे इंक्रीज द hardness, or they make them very tough and very strong, right? So the properties are their high layer melting point, they makes them very hard, they return conductivity, and they are also chemically inert. So example of such kind of transition interstitial compounds are titanium carbide, Mn4n. So these all are the example of interstitial compound. So got it? Interstitial compound means nothing, just फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसके क्रिस्टल में छोटे छोटे से गैप होते हैं, तो उन गैप में कार्बन, हाइड्रोजन, जैसे ये देखो ये गैप है एक, तो इन गैप्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को डाल देते हैं जो फिलर का काम करते हैं, और जिसके चलते इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अच्छी हो जाती है, लाइक दे हैव जो हायर मेल्टिंग पॉइंट, दे शो वेरी हार्ड, they retain conductivity, and they also chemically inert. So these all are the properties of interstitial compound. Done? Okay. Sure. Now, alloy formation. So D block elements also form a different kinds of alloy. So what are the alloy? Alloy are the blend of metal, either with the metal, metalloid, or नॉन मेटल, राइट? सो एलॉय किसको बोलते हैं? जब मेटल्स को मिक्स करते हैं, आइदर मेटल के साथ मिक्स कर दो, नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दो, या मेटेलॉइड्स के साथ मिक्स कर दो, दैट इज कॉल्ड एलॉय फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल वी हैव एन एलॉय ऑफ ब्रास, वी हैव एन एलॉय ऑफ ब्रॉन्ज, राइट? सो व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एलॉय, कि जब हम एलॉय क्यों यूज करते हैं, क्यों हम मेटल को मेटल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मेटल को नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और भी कंबाइन डिफरेंट डिफरेंट नॉन मेटल्स एज वेल, है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई? सो बेसिकली द एडवांटेजेस आर मेनी, लाइक दे बिकम मोर स्टिफनेस, दे आर लाइटर इन वेट, easy to shape, more resistance to corrosion, and high strength to weight ratio. तो वेट के हिसाब से उनका स्ट्रेंथ भी मजबूत होता है, और कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, इजी टू शेप, किसी भी साइज में बनाना आसान होता है, लाइटर भी होते हैं वेट में, एंड वेरी मोर स्टिफ. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द एलॉय फॉर्मेशन का एडवांटेजेस. नाउ स्मॉलर रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर इजिली रिप्लेसेबल एटम्स, राइट? सो एलॉय कितने टाइप्स के होते हैं? लास्ट स्लाइड. ओके. दिस वन, दिस स्लाइड. नो. यस. ओके. डन. चलो. नाउ एलॉय दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली. सो वन वी हैव अ फेरस एलॉय, एंड अनदर वी हैव अ नॉन फेरस एलॉय. So what is the difference between these two, ferrous alloy and non-ferrous alloy?
So ferrous alloy means they contain iron as a main constituents. So they contains iron plus carbon, or they consist of chromium, vanadium, tungsten, and mobilidium, right? So these are the ferrous alloy, or we say they are called ferrous alloy. Huh? Now, अगर लेस देन 0.1% आयरन एलॉय है या हाइयर देन 0.1 है, सो फेरस में दो तरीके के एलॉय होते हैं. अगर कार्बन का अगर कार्बन का परसेंटेज लेस देन 0.1 है, सो उसको आयरन एलॉय बोलेंगे. और अगर कार्बन का परसेंटेज जीरो से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड स्टील एलॉय. यानी एलॉय के अंदर दो टाइप्स के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस. फेरस के अंदर भी Fe प्लस कार्बन प्लस डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जैसे क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोबिलिडियम होता है. अगर कार्बन का परसेंटेज 1 से 0.1 से कम है, तब तो बुलाया जाएगा आयरन एलॉय, और 0.1 से अगर ज्यादा है तो बुलाएगा स्टील एलॉय. Now, what about the non-ferrous? So non-ferrous which do not contain Fe, like brass हो गया, bronze हो गया, जिसमें कि copper होता है ना, zinc होता है. So these do not contain any Fe, iron. ठीक है. So if someone asks what is the classification of alloy, you can classify as the follow. कि alloy are classified into the two type, that is the ferrous alloy and the non-ferrous alloy. और if we talk about the ferrous alloy, तो ferrous alloy की क्या कहानी होगी? Fe plus carbon plus chromium. If the carbon percentage is less than 0.1%, they are called iron. If the percentage is more than 0.1, then it's called okay. And the non-ferrous alloy are those which do not contain any Fe, like bronze and brass. Is this clear to everyone? So these are the chromium steel. This is a vanadium steel, right? Basically, beta, we are going with the D and F block elements, right? So these is the D and F block element chapter. If you're not able to join earlier, then just remember this is the third class of this chapter, right? That is D and F block elements. Done? Is this clear to everyone, or anyone having any doubt you can ask? Or we proceed to the next. Yes, everyone. Tell me fast. जल्दी बताओ. Just give me a second. I'll take some water. Till try to do this question. Yeah, this one. Calculate the spin only magnetic moment of M2 plus whose atomic number is 27. Find it. Yes. Anyone calculating? किसी का भी निकला क्या? Yeah, we already completed electrochemistry, right?
हाँ भाई, किसी ने निकाला क्या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर कैलकुलेटिंग स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट? हम्म That's a very simple formula. Mu is equal to under root n plus 2. We all know. Hmm? Okay. So we know the formula for calculating magnetic moment. Ki mu is equal to under root n plus 2. Right. This formula we are using to calculate the spin only magnetic moment. Okay. Now we know what is n here. So just write the electronic configuration. We have a 27. So it will be 3d7 4 is 2, right? So it will become 3d7 and 4 is 2. Now what is the unpaired number of electron in 3d7? Just calculate. 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron, 6 and 7. So total we have 3 unpaired electrons here. Hmm? In S we don't have any unpaired electrons because both are paired. So total number of unpaired electron here is 3. So we know the value, that is 1, 2 and 3. 3 unpaired electrons are there. So in plus 2 they are actually won't. So in plus 2 क्या हो जाएगा? प्लस 2, ये दो इलेक्ट्रॉन गया, तो यही बचा सिर्फ n इज इक्वल टू 3. सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सो अब ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा भाई? मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा. बिल्कुल निकल जाएगा. कैसे निकला है बताओ? दैट इज n इज इक्वल टू 3. सो म्यू इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3. 3 प्लस 2, 3 2 प्लस 5, 5 3 द रूट 15. तो हम सबको पता है 16 का 4 होता है ना, तो 15 का अराउंड 3.87, राइट? सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. जल्दी बताओ, समझ आया क्या? Is this clear to everyone? डन. बताओ भाई, किसी को समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क. यस. गुड. नाउ I'll give you one question. Just solve. What is the magnetic moment of Fe plus 3? Fe plus 3. Fe having atomic number 26. Fe plus 3 का क्या होगा? Anyone? फटाफट. Find. Root 24, Kiran. Okay. So Fe electronic configuration of is 3d6, 4 is 2. Okay. So in Fe plus 3, they having 3d5. 3d5 electronic configuration. Hmm? Okay. Now, how will you write this 3d5? 1, 2, 3, 4, 5. So 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, 5 electron. So n is equal to 5. Hmm?
नो इट्स रॉन्ग, सॉरी। अच्छा, सो n इज इक्वल टू 5 आ गया। यस, ट्राई टू कैलकुलेट अगेन। सो n इज इक्वल टू 5 मीन्स व्हाट इज म्यू? टेल मी। Mu is under root n plus 2. Root 35. Yeah, correct. So 5 plus 2. That comes out to be root 35. Root 35 means what? 36 we all know 6. So it is 5.87 approx. Okay. So this is how we can find the magnetic moment. Clear है सभी को? Everyone? Is this clear to everyone? How to Yes, calculate sir. the magnetic spin only magnetic moment? And the unit is Bm, Bohr magnetic. Done? Good. Chalo. Now, let's see the compound of transition metal elements. Okay, so let's see the different types of compound of the transition element. कि कौन कौन से types के compound से बनाते हैं. So they will form the chromium compound, that is K2Cr2O7. Huh? So they will form the potassium dichromate. This is the structure of potassium dichromate, K2Cr2O7, right? So this is how we'll draw the structure, K2Cr2O7. Okay, so they are basically found in chromite ore or iron chromite ore. Similarly, let's see how will you prepare this no पोटेशियम डाइक्रोमेट की पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप कैसे प्रिपेयर करोगे. तो चलो देखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो हम किस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करेंगे. सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, दैट इज Na2CrO4, राइट. Na2CrO4. सो Na2CrO4 का हमें प्रिपरेशन देखना है. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट Na2Cr4, दैट इज FeCr2O4 plus Na2CO3 plus O2, and that will be Na2CrO4, Fe2O3 and CO2. तो क्या होता है, कहानी ध्यान से समझो. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास FeCr2O4 है. उसको जैसे ही हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो विल गेट द सोडियम क्रोमेट, है ना, सोडियम क्रोमेट मिलता है, दैट इज Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट. फिर इस सोडियम क्रोमेट का कन्वर्जन होता है सोडियम डाइक्रोमेट में. ठीक है, कैसे? सो व्हेन वी ट्रीट दिस सोडियम क्रोमेट विद द इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इट विल कन्वर्टेड इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, दैट इज Na2Cr2O7. और साथ में क्या निकलता है? Na2SO4 plus H2. Now, in step 3, conversion of Na2Cr2O7 to K2Cr2O7. किसमें conversion हो जाता है? K2Cr2O7 में. So, Na2Cr2O7 plus 2KCl, this will gives us K2Cr2O7 plus 2NaCl. Right? Now, next देखो. Next हम क्या करते हैं? That is the preparation of sodium chromate, Na2CrO4. कैसे बनता है ये? तो ये फर्नेस में बनता है जब हम ट्रीट करते हैं इसको FeCr2O4 को सोडियम क्रोमेट के साथ. तो इसमें क्रोमाइट और प्लस सोडा एस को डालते हैं. ये मैं ऐसे बता रहा हूँ तुम लोगों को, पूरा डायग्राम वाइज उसी चीज का प्रिपरेशन. अभी ऑलरेडी यहाँ तक हमने देख लिया प्रिपरेशन. रिपीट. ओके, देखो बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट. दोबारा समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप in which the FeCr2O4 is treated with soda ash, that is Na2CO3. So when we treat with this soda ash, then we'll get Na2CrO4 plus Fe2O3 plus 8CO2. Now, in the second step, that is the conversion of sodium chromate, that is Na2CrO4 to sodium dichromate. एंड जैसे ही सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है ना, कुछ नहीं करना, जस्ट आप उसको KCl के साथ ट्रीट कर लो तो 2NaCl निकल जाएगा एंड K2Cr2O7 बन गया. सिंपल है. यानी अगर यहां तक बन गया Na2Cr2O7, so just you need to treat with 2 mole of KCl.
जैसे ही आप 2 मोल ऑफ KCl के साथ ट्रीट करोगे 2NaCl निकल जाएगा एंड K2Cr2O7 बन गया. सो दीज आर द 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. इज दिस क्लियर? Is this clear to everyone? Just confirm yes or no. Yes. Okay. Now move to the next. Let's understand through a diagram, right? So in the first step, हम क्या करते हैं? क्रोमाइट और एंड सोडा इसको डालते हैं एक फर्नेस में एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या मिलता है? दैट इज दिस वन, दैट इज Na2Cr2 Na2CrO4. नाउ ये जो Na2CrO4 होता है दे आर वेरी मच इम्प्योर. सो इसका फिल्ट्रेशन करते हैं और फिल्ट्रेशन हो जाता है Na2CrO4 का. नाउ आफ्टर फिल्ट्रेशन हम Na2CrO4 में थोड़ा सा डालते हैं H2SO4. सो जैसे ही इसमें हम लोग थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं दे विल फॉर्म Na2Cr2O7 जो कि रेड कलर का हमें दिख रहा है, ऑरेंज कलर का बेसिकली. नाउ अब हमारे पास Na2Cr2O7 बन गया. अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे KCl. तो जैसे ही KCl डालते हैं हमें मिल जाता है K2 जो कि डार्क ऑरेंज कलर का हमें देखने को मिल रहा है. राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट. डन. सो द फर्स्ट स्टेप इज, जल्दी बताओ. सो द फर्स्ट स्टेप इज, क्या है पहला स्टेप? सो इन द फर्स्ट स्टेप हमने सबसे पहले कहाँ डाला? फर्नेस में डाला. किसको फर्नेस में डाला? सो फर्स्ट स्टेप में हमने फर्नेस में डाला है FeCr2O4 को और साथ में सोडा एस को. तो जैसे ही FeCr2O4 और सोडा एस को हमने डाला तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिल गया Na2CrO4 प्लस Fe2O3 एंड 8CO2. सो हम लोगों को यहाँ से सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होता है. बेसिकली जस्ट यू नीड टू रिमेम्बर कि जब हम FeCr2O4 को डालेंगे सोडा एस के साथ ना तो हम लोगों को यहाँ पे सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन होगा ना. सोडियम क्रोमेट में फिर है तुम्हें क्या फिल्टर करना है थोड़ा, और फिल्टर करके इसमें H2SO4 डाल देना है. तो मिल जाएगा सोडियम क्रोमेट से सोडियम Na2Cr2O7 दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट. और डाइक्रोमेट में जैसे ही हम KCl डालते हैं तो हमारा बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट. राइट. गॉट इट एवरीवन? एक बार बता दो फटाफट. क्लियर है? हाउ विल यू गेट द पोटेशियम डाइक्रोमेट? Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज? क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का? ओके, सो लेट्स सी द प्रॉपर्टी. द फर्स्ट प्रॉपर्टीज आर दे आर क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड विद द ब्राइट रेड ऑरेंज कलर. कैसे होते हैं? तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि ब्राइट रेड ऑरेंज कलर के होते हैं. ठीक है. सो दे आर द क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड विद द ब्राइट रेड ऑरेंज कलर. ये हो गया स्ट्रक्चर. K2Cr2O7 को तोड़ोगे तो Cr2O7 ट्वाइस नेगेटिव आएगा. So we'll draw the structure like this, right? So let's see how to draw the structure of Cr2O7 because K2Cr2O7 2K टूट जाएगा 2K plus Cr2O7 twice negative. So Cr2O4 बिहेव कर रहा है और दूसरा इसका इंटर कन्वर्जन भी होता है. What happened, sir? Uh, in which case, beta? In which case you want? What happened? Since we prepare now crystalline ionic solid with the bright red orange color they having, now we are going to study the properties of chromate and dichromate ion, right? Okay, suddenly video stuck. Okay, okay, no worries. So Cr2O4 twice negative and Cr2O7 twice negative are interconvertible. ये एक दूसरे में interconvertible होते हैं in aqueous solution. ठीक है. तो aqueous solution में they are interconvertible with each other. ठीक है. एक दूसरे के साथ interconvertible होते हैं. For example, if we have a CrO4 ट्वाइस नेगेटिव, वो इजिली कन्वर्ट हो जाता है Cr2O7 ट्वाइस नेगेटिव में. राइट. फॉर एग्जांपल ये देखो ये CrO4 ट्वाइस नेगेटिव है तो ये कम पीएच पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cr2O7 ट्वाइस नेगेटिव. जैसे कि ये देखो ये वीक एसिड था इसमें इंटर कन्वर्टेबल है. नाउ
इसका स्ट्रक्चर का बात करो अगर CrO4 का, so they having tetrahedral structure, कैसा होता है? So they having tetrahedral structure. और Cr2O7 की भी बात करो तो they having also a tetrahedral structure, ठीक है? तो इस तरीके से आप इन दोनों का स्ट्रक्चर ध्यान में रख सकते हो, नोट कर लो. No, there is no classes in June, right? So no classes in June, beta. Okay. So this is the structure of CrO4 twice negative and Cr2O7 twice negative, tetrahedral and tetrahedral in both cases, right? Now, what about the solubility? So they are soluble in water. If you talk about the solubility of K2Cr2O7, so K2Cr2O7 are soluble in water. जैसे इसको water के अंदर डालते हैं ये soluble हो जाता है, ठीक है? Now, in acidic solution, what is the nature of this Na2Cr2O7? So in acidic solution, Na2Cr2O7 liberated nascent oxygen, and due to this nascent oxygen, they use in a varieties of properties. So here, the oxidation state of Cr2O7 plus 6 to plus 3, it means they act as a very, very good oxidizing agent. So when we, put alcohol, or when we treat alcohol with the K2Cr2O7NH plus, they act as a very good oxidizing agent. So it can convert alcohol into aldehyde, right? Carboxylic acid, sorry. So they convert this alcohol into carboxylic acid. Done. So that's why they are act as a very good oxidizing agent. Beta, till now, the date is till 15. We have run the classes 15 May. After we'll give you the new schedule, right? So till 15 right now, and after 15 we'll give you a new schedule. Done. So in acidic solution, K2Cr2O7 furnace nascent oxygen. And due to this property, they act as a very good oxidizing agent. Sir, no classes after 15th. Yes, after 15th May. Right now there is no classes, but after the vacation, we started with the class again. Okay. So when we treat alcohol with the K2Cr2O7 NH plus, they will give the acetic acid. ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? Acetic acid will get, right? So always remember, alcohol को जब treat करेंगे K2Cr2O7 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? Acetic acid का formation होगा. Done. Yes, let's see the plan, what plan comes out, right? So अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि after till 15 we have a classes. After 15 we don't have any class. But let's wait for the official notification, right? Hmm. So alcohol is converted into acetic acid in presence of K2Cr2O7. Why? Because this K2Cr2O7 acts as a very good what? Oxidizing agent, right? Is this clear to everyone? Okay, right. So this is the very important, this is a very, very important properties of this K2Cr2O7. Okay, very good oxidizing agent. Now, similarly, when we treat this with in acidic medium, when we treat with FeSO4, they oxidize Fe2, Fe plus 3, H2S को oxidize कर देगा, 3S में HCl को oxidize कर दिया. So they act as a very, very good oxidizing agent, right? Similarly, they oxidize potassium iodide to iodide, SnCl2 to SnCl4. So they act as a very good oxidizing agent. Just this property you need to remember. Got it?
everyone, right? So this is the basics property that we need to remember, कि how oxygen get convert this thing. समझ गए? So the three things remember. K2Cr2O7 का structure क्या होता है? Tetrahedral. How to prepare K2Cr2O7, and the next, it act as a very good oxidizing agent. Why they act as a very good oxidizing agent? Because they have a nascent oxygen. Due to presence of this nascent oxygen, they behave as a good oxidizing agent and it help in oxidation. For example, ये Ki को I2 में convert कर देगा, SnCl2 को SnCl4 में convert कर देगा, एंड सिमिलरली अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में कन्वर्ट कर देगा. So that's why they act as a very good oxidizing agent, right? So we study about the K2Cr2 in next class, that is in tomorrow. We are going to study the KMNO4 in a detailed way, right? These are the second important compound of the D block elements. So two very important compound of D block elements are K2Cr2O7 and KMNO4. So we completed K2Cr2O7 today, or in next class, that is tomorrow, we are going to study the KMNO4 in a detailed way. Got it, everyone? Done? चलो, थैंक यू. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, है ना? मिलते हैं फिर कल, और we'll start with the KMNO4. Okay, take care. Bye everyone.